Respected Khan sir, Diksha, Dr. Pooja, Sanjay sir, and dear students, good afternoon to you all. Yes, so today I'm going to talk about how to start preparation for civil service examination. Most of you are from first year and second year students. Fine. So I'll be sharing my experiences as a parent of Tina and also being a faculty of current affairs in KSG. So I'll be sharing some strategy which you can follow to crack this exam. Fine. So you all must be knowing how this exam is conducted. It is conducted in 3 stages. Prelims. Prelims mein what is checked? The knowledge of the candidate, the mental alertness, the aptitude, the GK, knowledge of the current affairs. It is objective. So the 3 stages require different kind of preparation. The mains, the second stage is mains. Mains, as you know, is subjective. What is required? Answer writing skill is required. If you are blessed with that, that's wonderful. Otherwise, this exam, to clear this exam, you should have, a good answer writing skill, a good vocabulary, a crisp vocabulary, good expression on paper is required. The third stage is interview, and that is the toughest. Here, UPSC tests not only the knowledge of the candidate, but also the mental strength, the ability which a candidate can deal with a situation. This is a very tough stage. Either you can make it or break it. So this exam is really very, very tough. Yes, it's very, very tough, and requires a lot from students. Why it is so tough? It's all about, the vast syllabus it carries. The syllabus, multi-diverse subject. It contains multi-diverse subjects, right from economics, geography, history, science and tech, art and culture, environmental science, and yes, the most important is current affairs. So, the questions which students always put forward is, to me, as a parent, क्या coaching लेना ज़रूरी है? First thing. What about online content? Am I right? Fine. These are the questions which come to mind. Then what about the online coaching classes? Then what about self-study? I will say, a mixed approach is required. Coaching institute, yes, they definitely help. They guide you. As this exam is having, it tests you in diverse topics. उसके लिए books इकट्ठा करते करते ही आपको 3 महीने लग जाएंगे. But in a coaching institute, you get a ready-made, material. A faculty is there who properly guides you. So as a parent, when I was looking for a coaching institute, I was looking for 3-4 things. First, what is the strength of the class? How good is the faculty? कि टाइम पास वाले हैं कि भाई स्टोरी सुना दी. They are up to the point or not? What about the study material? What about the administrative staff of the coaching institute? They are helpful or not? यदि बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का है और वो साथ में अपने ग्रेजुएशन के साथ यदि कोचिंग भी करना चाहता है, तो यदि उसकी असाइनमेंट टेस्ट हो रही है और वो मिस कर जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल होना चाहिए. हु कैन एडजस्ट देम टू सम अदर वीकेंड क्लास, जहाँ वो अपना कैचअप कर ले अपना कोर्स मटीरियल. रेगुलरली इट्स टेकिंग टेस्ट और नॉट. So I selected KSG. As you know, Tina was a student of KSG, and I found the faculty is really very good. Khan sir used to teach, and Tina आज भी बताती है मुझे कि Khan sir इतना he used to teach such a wonderful way. She still counts the things. Sir, you're smiling now. And the USP of this institute, which I have found as a faculty, is that यहाँ पे regular NCERT की test होती है.
As you know, the NCRTs are the foundation. So test is required. ठीक है? Then Khan sir, he is having vast experience for the past 30 years. He is associated with this coaching institute which deals with this exam. He knows all the nitty-gritty things. So he carefully selects, he makes the candidates practice answer writing skill himself. I have seen him, selecting every month current affair topics, 4 or 5, and then giving those topics to students. And the answer writing skills are, they are asked to write the answers, and then he's having many evaluators who evaluate the answers written by the aspirants, and then he guides a lot. Coming to other thing, एक प्रैक्टिकल डिफरेंस भी हम देखें यदि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या हम एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एनरोल करते हैं. ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो इन फैशन दीज डेज. एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करते हैं. सपोज यू एनरोल इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट. सपोज आपका 8 बजे का क्लास है. यू विल गेट अप बाय 6. start at 7 from your house and go to the class regularly. वहाँ फिजिकली आपको एक फैकल्टी मेम्बर मिलेगा, स्टूडेंट्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, यू विल बी राइटिंग नोट्स. यदि हम कंपेयर करते हैं कि हमने एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास में एनरोल किया है, नाउ इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, 50% ऑफ अस पीपल वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड. आप ज़रूरी नहीं है कि 8 बजे अपना लैपटॉप खोलेंगे, कोचिंग क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी ऑनलाइन, या मोबाइल पे आप देखेंगे एंड 100% आप नोट्स नहीं बनाएंगे. नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रिटेन इन मेमोरी. फॉर रिटेंशन इन मेमोरी, जो भी आप सुन रहे हैं उसके नोट्स बनाना रियली इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं ये. कॉम्पिटिटिव एज भी नहीं मिलता. यदि आप एक फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं एंड इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट, so the faculty will solve the doubt there and then. और यदि ऑनलाइन में यदि आप कोई डाउट पूछते हैं तो आप टाइप करेंगे एंड यू विल बी वेटिंग फॉर द आंसर, वो दिन कभी आएगा भी नहीं है. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो, जब आपने लैपटॉप खोला है या मोबाइल खोला हुआ है, आपका व्हाट्सअप मैसेज में कोई पॉपअप आ जाता है फ्रेंड का, अरे भाई मेरा बर्थडे है, आपको आना है. ओके तो चलो कल कर लेते हो, इसको पॉज करते हैं, छोड़ो भाई क्या करना है हमको, लेट अस गो टू ठीक है. सो दैट क्लास गेट्स ओवर. लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो रेगुलरली सेल्फ डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड. एक टाइम टेबल रहता है सेट, लाइक एक वीक वहाँ हिस्ट्री की क्लास चलेगी. ऑनलाइन में हमें नहीं पता रहता कि वो आज यदि हिस्ट्री की क्लास दे रहे हैं तो कल वो ज्योग्राफी की देंगे या इकोनॉमिक्स की देंगे. एक कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. सो यू हैव टू जज ऑन दिस एंड अ मिक्स्ड अप्रोच यू शुड टेक. दैट यदि आप एनरोल कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स वेल एंड गुड. ऑनलाइन कंटेंट डेफिनेटली रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और सेल्फ स्टडी, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. आप पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, फिर एग्ज़ाम पास कैसे करेंगे. अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे जो अक्सर पूछते हैं, दैट क्वेश्चन इज़ कि हम तो फर्स्ट और अभी सेकेंड ईयर में हैं, हम अपनी प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हाउ टू गो फॉर इट. मोस्ट ऑफ यू आर पॉल साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं आप. And if you choose your graduation subject as an optional, that is wonderful, excellent choice. क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, आपके पास कोर्स मटेरियल है, you are having college faculty here to help you. So dedicatedly आपको अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. Your half work is done. You are doing your half work right now at the college. These days the pattern, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, that has been changed over the years. अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, that contain the static portion as well as the dynamic portion. Let me make you understand like this, क्योंकि आप पॉल साइंस से रिलेटेड, पॉल साइंस है आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट. सो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी फ्यू मेन एग्जाम्स में जो आए हैं कि टेल अबाउट द OBOR प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, वन बेल्ट वन रूट, या लेट अस टॉक अबाउट द
you can say the major political event of this decade, Brexit, which is going on, you know. So what implication it is going to have on India if Brexit happens? You know, this kind of question can come. Yeah, OBR project Italy ने अभी join किया है ना, what repercussion it is going to have on EU? Fine. So ये आप कैसे पता लगाएंगे? How to deal with this dynamic portion? For that, it's very important to read newspaper daily. Many students say that कि नहीं मैं क्या मैगजीन पढ़ के कोई करंट अफेयर की काम चल जाएगा? नहीं, आपको डेली डेडिकेटेडली यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एक कंटिन्यूटी न्यूज़ की बनी रहे, आपको पता रहे कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी इवेंट में क्या चीज़ चल रही है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नोट्स बनाने चाहिए, उसकी पेपर कटिंग्स रखनी चाहिए. नॉट टू वेस्ट टाइम ड्यूरिंग योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, यू कैन डू दिस. ये काम आप कर सकते हैं. एक और फ़ायदा न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है, इट एनरिचेज योर वोकैबुलरी. यू अंडरस्टैंड मैनी की टर्म्स. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. तो अभी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो ये काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट एल्स दे कैन डू? They can start improving their answer writing practice. That's very important. Mains के question paper में, which is a subjective, 20 questions are there which are coming from diverse topics, and that you have to write in 3 hours. How you are going to write? So you have to improve your writing speed without compromising on your handwriting. बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग मैंने देखी बहुत ही ऐसी हो जाती है कि एग्जामिनर ही गेट्स फेड अप ये कि क्या है. सो यू कैन पॉलिश योर थिंग. सी दीज आर द टिप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन पॉलिश योर हैंड राइटिंग. दिस इज द टाइम you can work on it. Another thing, when you are in first and second year, what else you can do? You can enhance your personality. Prepare yourself for interview. How? By engaging in group discussion with your fellow friends. I've seen many students, who are very good at writing, पर जब बोलने की बात आती है वो शब्द भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं, लिखते लिखते बोलना भूल जाते हैं. I have seen many students brilliant and who have not been able to clear interview just because of 1 mark. It's very disappointing thing which happens. दिल टूट जाता है कि कैसे. So you can work on that. Here at this point I would like to say that one of the KSG's USP is the interview guidance program, which is conducted by Dr. Khan, and I think most of the candidates, हमारे इंस्टीट्यूट में जनवरी से मार्च तक की candidates are there who are just coming for interview. He is not there, he is having one-to-one interaction. He takes personal interest and grooms and mentors them. Most of the candidates who have cleared the UPSC this year and the past years have undergone through the interview guidance program conducted under Dr. Khan, and he takes personal interest. I have seen one-to-one interaction he does, personality review is there, the strengths and the weaknesses are there, then he work on what improvements are required, like that. Coming to the other thing, what else we can do? You can work on essay writing. This is the right time. पॉल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके काफ़ी सारे टॉपिक्स पे एसेज भी आते हैं, मैंने देखा है. दिस इज एन एडेड एडवांटेज. जैसे कि लास्ट ईयर ही था, व्हाट इज नैम्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स रेलेवेंस इन टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड. ये आपका सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं आप इस पर. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, इस पे टॉपिक था. आप इतना अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, आपका अपना सब्जेक्ट है. यू कैन वर्क ऑन दिस. और टॉपिक्स होते हैं जैसे साइबर स्पेस एंड इंटरनेट,
blessing or curse. You know, now is the time of fourth industrial revolution. Jobs are going to be compromised. ये बिल्कुल hot topic है. आप topic select करिए and keep on revising, keep on writing one essay या 2 essay a month. Keep on practicing essay. This is the right time. एक साल में मेहनत में ये नहीं हो पाता है. You have to work for this continuously for 2-3 years. तब जाके foundation आपका बनता है. एकदम से आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसे लिखने बैठ जाता हूँ. It's not possible. How it's possible? How it's possible? You have to work on it. And this is the right time. Why to waste time? Why to waste time? Another question students ask कि इस दौरान हमने study material तो इकट्ठा कर लिया है, but how to go with it? How to go with it? कैसे start करें? Material जैसे हमने इकट्ठा किया है, हम उसको 3 भाग में segregate कर लेते हैं. Really required, first, second additional and third current affair. Let me take an example क्योंकि आप आर्ट्स फैकल्टी से हैं. Let me take an example of हिस्ट्री सब्जेक्ट. मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपको जनरल स्टडीज़ और इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो NCERT ब्रश अप करनी है आपको 6 से 12 तक की हिस्ट्री की. देन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हिस्ट्री, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सेकेंड आ गया आपका एडिशनल. जब आपने ये पढ़ ली, एक बार पढ़ने से बात नहीं बनती है. यू हैव टू री रीड इट अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. Then you will be able to retain in your memory. It's not easy. It's not easy. After that, completing your NCERT, you have to come to the next additional books. Now, what are the additional books you have to read? विपिन चंद्रा, आपने काफ़ी टॉपर्स के साइट वाइट पे देखा होगा. You all are knowing कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी है. Then switch over to the secondary books. या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से यदि आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी मटीरियल है, go through it. Then comes the current affair portion. First, second and third. Current affair. Now, you will ask me, history is a static subject, you know. Current affairs उससे क्या करना है? See, our aim is to clear the exam. Exam perspective से, in 2018, Rakhi Gadi, a Harappan site was in news. In 2019 January, you know, Rakhi Gadi is one of the largest site of Harappan civilization, and 2-3 mounds have been excavated by ASI, Archaeological Survey of India, and 2-3 skeletons have been excavated from there. This January 2019. तो क्वेश्चन आ सकता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आ सकता है. कैसे? आपने यदि 10th और 12th की हड़प्पन सिविलाइजेशन की बुक पढ़ी हुई हो, and if you can recall Citadel, Lower Town. What else? Granary, Great Bath. Harappan people were, you know, good at what? What was their occupation? Agriculture, drainage system, wonderful. You know, the grid pattern, road structure, and all those things. They were good at, you know, making potteries. They were expert in making terracotta potteries. They were expert in making beads. And they were using plow. And they were using ox. ऑक्स कैसे पता चला? सील से पता चला. सील्स में कौन से एनिमल्स डिपिक्टेड थे? हॉर्स था? हॉर्स वॉज नॉट देयर. रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वे देयर. दे वर नॉट नोइंग अबाउट द हॉर्स. दे वर नोइंग अबाउट द कॉटन. येस, दे वर नोइंग अबाउट द कॉटन. Cow was not there. Excellent. Wonderful. Cow was not there. Then what about the religion? What about the religion? Yes, they were worshipping the mother goddess, isn't it? And they were believing in life after death, something like that. तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या उन्हें आयरन के बारे हम वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस नाउ ऑन दिस इशू. व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस? क्योंकि ये चीज़ अभी न्यूज़ में थी हिस्ट्री से रिलेटेड. सो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन कि पीटी में, प्रीलिम्स में इस साल डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वर दे नोइंग अबाउट आयरन? नो, दे वर नॉट, बिकॉज द टूल्स वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर. So you have a wonderful opportunity. You are in Delhi, you can go to, you know, visit National Museum, पूरे हड़प्पन gallery I go. How I am remembering, I am an electrical engineer, but I visit, you know, museums. हड़प्पन gallery है, you go there, all, you know, artifacts are displayed there. I used to take my kids there. तो आप कभी जब बोर हो जाएं तो वो galleries visit करिए, you know. आपको पूरी history, you can take a guided tour, and you know, there is Buddhist gallery. All sections are there.
You can visit that. खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता वहाँ पे. You can enjoy and you can write beautiful, wonderful notes. You can take pictures. और आपको अपने आप दिमाग में आ जाती हैं सब चीज़ें. The dancing girl का artifact is displayed there in National Museum. So this is the way, how you should go. Like हिस्ट्री की यदि हम बात ही कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन बन सकता है इस साल. जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट टैग मिला था अभी नालंदा महाविहारा को, ऑल द 2 years बैक मिला था. तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल का ही हमें जी के पढ़ना है, 2 साल पिछले का भी पूछा जाता है. सो यू शुड हैव दैट नॉलेज. लाइक क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यू विल से मैम क्या बन सकते हैं क्वेश्चन. लाइक इट वॉज अ मोनास्टिक एंड स्कॉलास्टिक इंस्टीट्यूशन. हु वॉज द फेमस स्टूडेंट देयर? Zhuangzang was the famous, yes. And which were the contemporary institutions related to Nalanda? Can you tell? Was Takshila there? Where is Takshila? Now in Pakistan. Wonderful. You are brilliant students. You can do wonders. Excellent. So let us now talk about some uninteresting things. बिकॉज यू आर फ्रॉम आर्ट्स, तो हो सकता है आपको साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे ना लगते हों पढ़ने में. जैसे कि अभी ही इन द मंथ ऑफ मार्च एंटी सैटेलाइट टेस्ट वॉज कैरिड आउट. सो दिस द राइट टाइम जो अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में रिसर्च की जाए. दैट वॉज अबाउट द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम ऑफ DRDO. यू कैन गो थ्रू कि भाई लो अर्थ ऑर्बिट में किस सैटेलाइट को हिट किया. सो यू कैन गो इन टू डेप्थ. अभी आपके पास क्योंकि टाइम है आप कर सकते हैं, बाद में जब आप ग्रेजुएट कर लेंगे तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा. सो दिस एग्ज़ाम इज़ रियली वेरी वेरी टफ एंड रिक्वायर्स लॉट फ्रॉम अ कैंडिडेट. It is a challenging exam and requires lot of perseverance from candidates. And you can say all of us, the weakness in all of us is in giving up. Bhai nahi hoga. Really big, vast course is there. कभी-कभी, demotivate हो जाते हैं जब हम disinteresting subject पढ़ते हैं. We get demotivated. So that should not come in between you. You should always be charged. So, what to do? So if you are dedicated super student, this whole journey of learning and studying can be really enjoying and very, very rewarding. Like how, they have achieved their goals. The 2 cute girls sitting here, they have achieved their goals. So, I end my talk here. And best wishes for your future. Thank you, Kansa, for inviting me. And special thanks to Shakun. And all the best for your future, dear children. And God bless you all. Thank you.